to Radiology Academy. Today class is about brain aneurysm. ये एक सीटी here you can see this CT ये brain RTA case है इसका. Here you can see this is a CT RTA case. It's contusion everywhere. In CT, the blood appear bright when it's clot, when it's bleeding in this area. The Huntsville unit of bleed was 60 to 90 HU Huntsville unit within 1 to 3 days. सभी मतलब ब्लीडिंग होने का एक और 3 दिन के अंदर में जो भी ब्लड रहेगा वो 60 to 90 HU रहेगा. मतलब उसका जो सीटी वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगा, इसीलिए उस समय में जो ब्लीडिंग है वो अच्छे से ब्राइट होके आता है. उसके बाद जब वो 4 to 14 डेज़ के अंदर वो ब्लीड रहेगा तब क्या होगा, विदिन 4 to 14 डेज़ द ब्लीड अपियर लिटिल बिट ऑफ हाइपो. उस समय में इन दैट टाइम द हंट्सविल यूनिट वाज लाइक 30 to 60 हंट्सविल यूनिट. सो उस समय में क्या होगा, जो ब्लड है वो थोड़ा डिजॉल्व हो जाएगा, उसका जो डेंस है वो डेंसिटी कम हो जाएगा, तो इसलिए वो थोड़ा हाइपो से नीचे चला जाएगा इन 4 to 14 डेज. 4 to 14 डेज उस टाइम से इन दैट टाइम फ्रेम इट्स कॉल्ड सबएक्यूट हेमोराइज. मतलब ये डिजॉल्व हो रहा है, जो हेमोराइज हुआ था वो सबएक्यूट है, मतलब 4 to 14 डेज के अंदर. उसके बाद जब 2 वीक्स क्रॉस कर लगा तब क्या होगा, ब्लीडिंग डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. तब उस एरिया का जो इन द टाइम द हंट्सविल यूनिट वाज 0 to 30 हंट्सविल यूनिट. मतलब 2 वीक्स के बाद जो ब्लीडिंग होने का 2 वीक्स के बाद जो ब्लीड का वो है डेंस है वो कम हो जाएगा. तो उसमें क्या होगा, जो हंट्सविल यूनिट है वो 0 to 30 हंट्सविल यूनिट हो जाएगा. तो ऐसे हम लोग देख के बोल सकते हैं कि कौन सा पेशेंट का ब्लीडिंग कितना पुराना है. और आज तो मेरे पास जो भी है वो एक्यूट ही है. एक्यूट मतलब 1 to 3 डेज के अंदर जो भी ब्लीड होता है उसको एक्यूट बोला जाता है. यहाँ पे मेरे पास एक केस, हाँ ये वाला में देखो तो इसका, ये पेशेंट का ये एक्यूट स्टेज में है. एक्यूट स्टेज में होने से जो ब्लीड है वो ज़्यादा ब्राइट आएगा. एक्यूट स्टेज 1 to 3 डेज के अंदर जो ब्लीडिंग रहता है उसको एक्यूट बोला जाता है. और कोई सा भी डिजीज़ मतलब विदिन मिनट्स इसको हाइपर एक्यूट बोला जाता है. जो तब मतलब जो इंस्टेंटली सीटी किया तो उसका हंट्सविल यूनिट 30 to 45 रहेगा. उसके बाद जब 1 day to 3 डेज के अंदर हम सीटी करेंगे तब उसका हंट्सविल यूनिट ज़्यादा रहेगा, 60 to 90. तो उस टाइम फ्रेम को एक्यूट बोला जाता है. और एक्यूट के बाद आता है सबएक्यूट. सबएक्यूट में 4 days to 14 डेज रहता है. उस टाइम फ्रेम के अंदर सीटी किया तो जो ब्लीड है वो ब्लीड का डेंस थोड़ा कम हो जाएगा, 30 to 60 हंट्सविल यूनिट. सो उसको सबएक्यूट बोला जाता है. तो ऐसा होता है कि पेशेंट को अंडर एडमिट होने के बाद वो 1 day 2 day उसके बाद 1 week ऐसे सीटी ब्रेन करके देखता है कि जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो गया है
या वो डिजॉल्व होने जा रहा है, तो वो देखने के लिए सीटी करता है। तब जो सबक्यूट होता है तब 4 to 14 डेज में जो होता है वो सबक्यूट होता है। तो जब भी तुम लोग केस देखोगे तब ऐसे देख के ही पता चलेगा ये तो एक्विड है, मतलब ये रिसेंट ब्लीड है। यहाँ पे देखने से पता चलेगा ये वेंट्रिकल के अंदर है। Here you can see the bleeding in this patient under the ventricle. This area is called ventricle. In this area, if you see any type of bleed, it's called interventricular hemorrhage. एक्चुअली मैं ये सब पहले बोल चुका हूँ, लेकिन ये याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन ब्रेन इट्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाइड वेदर इट इज़ interventricular, intracerebral or SDH, subarachnoid, EDH, epidural hemorrhage। और ये जो है ये इंटरसेरिब्रल हेमाटोमा है। इसको हम 3D में दिखाएंगे तो here you can see in 3D। Oh, this is not a 5 mm slice। Here you can see in 3D we find out the bleeding is in cerebrum area, so it's called intercerebral। If you convert the 5 mm slice in 3D, it's appear blurry just because there is no that much information। Here you can see in this patient the bleeding appear in left side of the cerebellum। This area is called cerebellum, so it's called intercerebral hemorrhage। And also you will see the bleed in the ventricle, it's called interventricular hemorrhage। So it's properly identified in this patient। यहाँ पे ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। और ये जो नीचे जो दो इमेज है वो ये 3D है। इसको रोटेट करके हम जो भी इमेज चाहिए वो इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे देखने से here you can see this is the sagittal image in the MRCP। The yellow here you can see this was the okay, we stay forward to next case। Here you can see in MRI we have identified if there was a aneurysm or if there was a blood supply is interrupted in any area of brain, it's properly identified। Here you can see this is the calcification of this patient। This case is intercarotid artery aneurysm। I don't play anything, there was some type of, here you can see this is the calcification in this T2 image। In MRI if there was a calcification it will be show every sequence dark। Here you can see this area was dark in this DWA sequence, and this is the flare sequence। You will see this area was dark। I will show you the axial
In SWI, if there was any type of calcification, it's appear hypo, means dark. In T1 also it's appear bright and dark. I will show you what is the purpose of this patient. You will see this is the area of calcification. In brain, the calcification occurs when the blood vessel was stored some type of element, means calcium or the type of element was stored in blood vessel. It's created calcification. So I will show you the actual purpose of this patient. Here you can see this is the vertebral artery of left. Here you can see the aneurysm. I will show you. This is the left vertebral artery. Sorry, this is the left carotid artery, internal carotid artery, and this is the internal carotid artery. It's the left, and this is the right internal carotid artery, ICH. So here you can see in this Angio top sequence we only visualize hypodense whether it is the blood flow happen. It means यहाँ में जो भी हाइपोडेंस एरिया दिखाई दे रहा है वहाँ में क्या हो रहा है, वहाँ में ब्लड फ्लो हो रहा है. और यहाँ पे अच्छे से देखने से पता चलेगा ये अलग एरिया में जाके हाइपोडेंस दिखा रहा है. इसका मतलब यहाँ में भी ब्लड जा रहा है. यहाँ में देखो तो ये हाइपोडेंस दिखाई दे रहा है. यहाँ में जो कि मैंने पहले दिखाया था ये कैल्सिफिकेशन जैसा दिखाई दे रहा है और ये नॉर्मल लोकेशन नहीं है. कभी भी मतलब एबनॉर्मल लोकेशन में कैल्सिफिकेशन हो तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है. फिर भी ये तो पूरा आर्टरी के इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साइड में ही है. ये देखने से here you can see it's near to internal carotid artery, so it's questionable. The thing I'll show you in MRCP 3D view. Here you can see in sagittal image I'll show you the aneurysm in this patient. Aneurysm means in this internal carotid artery there was a leakage of blood, so it's appear outside of the area of artery. Here you can see this is the CT image. It's showing the bleeding happen in this area. Here you can see this patient have aneurysm in this area. It's so small. Yeah, also this is the aneurysm in this area. Here you can see this is the internal carotid artery. So here you can see in this area there is a blood clot or bleeding in this area. It's appear bright in CT. That's because this is the Angio sequence of CT brain. I'll show you next image. Here you can see it's properly bright in this arterial phase
of CT brain angio. It's appear totally bright. Just because in this internal carotid artery there was a bleeding occurs in this artery, so that in this area was showing bright. This is the cerebral image of this case. You will see the bleeding area in that much. So it also occurs the severe consequence of AVM, just because in AVM the bleedings appear rapidly, क्योंकि जो आर्टरी होता है वहाँ से सबसे ज़्यादा स्पीड से ब्लीडिंग ब्लड फ्लो होता है, तो उसके वजह से आर्टरी में कभी भी इंजरी होने से वो आर्टरी कमज़ोर है या आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर आने के वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा कुछ होने से आर्टरी रप्चर हो जाता है, मतलब आर्टरी फट जाता है, तो उसके बाद ऐसे ब्लीड होता है। तो ऐसा कुछ आर्टरी में रहने से इसको एफएम एन्यूरिज्म बोला जाता है। Here you can see in this case also, this is the case of like severe bleeding, just because it's appear fully bright and the area is so large. In this case the patient have no symptoms, just because it's appear normally and it's not causes that much problem in this patient. So it will be just it's a old AVM. So in this area you can see the AVM was like clotted calcification, deposit of some type of element was deposited in this AVM, just because it's old. I will show you the here you can see, I will show you the this is the vertebral artery, intercranial artery. Intercarotid artery goes in this way, and this is the area of intercranial artery. You will see the leakage in this area and it's appear bright in this whole area, so it's becoming bleeding in this area, so it's appear outside of the artery and it's create calcification, just because it's very much old. In this angio it's not properly, I don't have option to get this sequence proper MIP, so it's little bit of, I'll show you how it can really show the MIP in this lesion, but I don't find the option how can create this sequence. Yeah, here you can see this is the MIP image. Okay, after that how I can move. Here you can see in the here you can see in this cornal view the artery was properly showing in MIP images, because it's combine every image. So I want to scroll the image. After that how I can do.
Here you can see it's scrolling right now. It's a little bit of different in this. Here you can see the artery was moving properly. I will show you the axial AVM in this case. Here you can see this is the sagittal view of this patient. The aneurysm in this area was in this area, and the calcification is not showing in top sequence. It's appear hypo, so it's not showing that. But here you can see the blood flow. This I will draw the this is the internal cerebral artery. It's look like go in that way, but here you can see the bleeding appear in this area. It's bright. So in this area the AVM was born, and after some year it's collected the element and it's created calcification. And right now also in this area some type of blood flow happen, so it's appear bright. Normally the artery goes like straight line, like a line, but here you can see this point. In this point it's appear another line, so it's called AVM. It's appear in the bleeding of occurs in the brain. जब भी ब्रेन में ब्लीडिंग होता है तो ऐसा कुछ दिखाई देता है. ये उसका सीटी इमेज है. सीटी में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये एक कैल्सिफिकेशन है, मतलब यहाँ में कैल्सिफिकेशन स्टोर हुआ है, बट यहाँ में थोड़ा सा ब्लड फ्लो भी है. मतलब ब्लड फ्लो एनेरिज्म के अंदर तो ब्लड फ्लो होता ही है, उसके बाद जो ब्लड है वो कुछ एलिमेंट कलेक्ट करके रखा हुआ था. Also to the next case is MRI is more important to identify infarct, just because CT doesn't recognize small infarct. This is a T2 image. Here you can see it's look like normal, but I show you how you identified if there was any type of problem. So you will next I will show you the diffusion and ADC image in the last, just because diffusion and ADC was proper indicate if there was an infarct, but we try to identify it in FLAIR sequence. Here you can see there is no edema in this brain. This was edema. This area was edema in this brain, but it's similar to both sided, so it's appear it's not indicate the infarct or any type of problem. If you see that type of information in both sided, it's not a problem, but some cases it's appear. But here patient history of infarct and query of infarct, and we will try to identify it. Here you can see it's appear little bit of hypo, and this is a SWI sequence. It's appear normal in this SWI. If you see any type of bleed, SWI appear hypo. This
this scenario SWI was showing no any hypodense lesion. Here you can see this is the T2 image, T1 image. T1 image, in T1 image ventricle was hypo, fluid was hypo. So here you can see there is a no any different information in this T2 image. I will show you the if you have history of weakness and slurring speech, it means there is some type of infarct or bleeding appear in patient. So in MRI we will find out in DWI sequence. So here you can see the DWI image is look like in this patient, but it's appear little bit of hypodense in this area. Here you can see the straight line like hypodense area in this radiograph, in this DWI image. So if patient have a that type of small infarct also, it's appear lots of problem, just because infarct is causing weakness in limbs, also slurrings of speech, difficulty in walking. So here you can see in this DWI image it appear hypodense in this lesion. So ऐसा कोई पेशेंट है जिसका ब्लीडिंग नहीं हुआ है लेकिन उसका प्रॉब्लम है, कोई लेफ्ट साइड या राइट साइड में वीकनेस है, सीटी करके देखा है, उसके बाद एमआरआई में जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से आता है। तो यहाँ में देखने से पता चलेगा कि ये पेशेंट का यहाँ में ये जो सेल है इसमें ब्लड सप्लाई रुक गया है और इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो सेल है उसमें इडिमा हो गया है, वो यहाँ में फ्लूइड आ गया है और यहाँ में ब्लड सप्लाई नहीं है। सो DWI इमेज में क्या होता है कि जहाँ में ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है वहाँ में ब्राइट आ जाता है। नॉर्मल टिश्यू के अलावा जो भी टिश्यू है वो ब्राइट आ जाता है DWI में। सो MRI करने से वो अच्छे से पता चल जाता है, लेकिन CT में भी पता चल जाता है, लेकिन CT में थोड़ा टाइम लगता है। जो एरिया में इन्फेक्ट हुआ है वहाँ में फ्लूइड आ जाने से CT में वो एरिया हाइपो दिखाई देता है, लेकिन वो एरिया हाइपो दिखाने के लिए हमको 24+ आवर के बाद ही पता चलता है, मतलब 1 डे या 2 डे ऐसा क्रॉस कर जाने से तब भी CT करने से पता चल जाता है। क्योंकि जहाँ में भी इन्फेक्ट होता है वो इतना जल्दी इडिमा नहीं होता है, वो सेल में कोई फ्लूइड नहीं आ जाता है और वो सेल ख़राब जल्दी नहीं हो जाता है, मतलब तो इसी वजह से CT में वो नहीं दिखाई देते। तो क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में CT करके देखता है, इफ़ देयर वाज ए ब्लीड इट्स प्रॉपरली showing in CT, but if there was a infarct it's not properly showing in CT in early stages, so we need to do MRI scan also when patient, जब भी पेशेंट MRI ब्रेन करने के लिए आता है वो पेशेंट का फर्स्ट CT का कोई ब्रेन का फीलिंग होता है या ऐसा कोई CT करवाता ही है नॉर्मली, कोई ब्लीडिंग का हिस्ट्री, ऐसा कोई स्ट्रोक हिस्ट्री रहने से, तो वो देखना ज़रूरी होता है, तभी तुमको आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि इन्फेक्ट था पेशेंट का। तो ये बहुत पेशेंट को देखने से तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये पेशेंट का इन्फेक्ट था यहाँ पे। लेकिन ये केस में तुमको आइडिया होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये जो स्लाइड यहाँ में इन्फेक्ट हुआ है ये just showing in diffusion there was a small lesion in this area, so it's not identified in CT just because its area was so small. Here you can see it's just a line. So if you see that type of lesion in DWI sequence, it's appear to infarct, but
We also compare with ADC. In ADC, this area was showing hypodense. It means it's a infarct. Otherwise, it's a some type of artifact also. I will show you in this ADC sequence. Here you can see there is a hypodense lesion in this area, so it's mean it's a infarct. We must compare with ADC. I will show you the ADC. Here you can see it's a hypodense area in ADC. It means this area was infarct. The blood supply in this area was not properly happen, or there was a blockage of vessel in this area, so it's appear bright in DWI. Here you can see the arteries was moving in different way, and it's create lots of branches. You will identify the name in CT also. If you do MRI, it's more important. यहाँ में जो आर्टरी दिखाई दे रहा है उसका जो नाम है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आर्टरी में ही प्रॉब्लम रहता है। कभी इन्फार्क्ट रहने से आर्टरी टोटली ब्लॉक हो जाता है, वो सीटी में भी दिखाई देता है। ऐसा कुछ पेशेंट मिलने से मैं तुम लोगों के लिए लेके आऊँगा। यहाँ में जो आर्टरी का नाम है वो एक बार मैं दिखा के देता हूँ। हाँ, यहाँ में सॉरी ये वाला लाइन नहीं सही था मेरे को। I don't need this line. Okay, here you can see the artery was moving everywhere. This is the internal cerebral artery, right, and this is the internal cerebral artery of left, right or left. This is the basilar artery, and those two was vertebral artery, just because this artery was flowing under the vertebra, so it's called vertebral artery. When it's connect in this one way, it's called basilar artery. So, and also the internal cerebral artery divided in left and right, it's called mid cerebral artery, MCA, and its and other branches goes to one anterior cerebral artery, and the basilar artery was, I'll show you the axial image in this case. Here you can see this is the medial cerebral artery, and this was the posterior cerebral artery. It's starting from basilar artery. Here you can see this is the basilar artery, and other two artery was, दिस इज़ द इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ में जो ऐसे ऊपर नीचे से आ रहा है ये दो इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी है, और ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड में जा रहा है वो मिड सेरिब्रल आर्टरी है, और ये जो दोनों साइड से आके जो ऊपर जा रहा है वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है।
ये एंटीरियर पोर्शन को ब्रेन का ऊपरी हिस्से को ब्लड सप्लाई करता है, इसीलिए इसको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बोला जाता है। सो ये केस यहाँ में ही ख़त्म हो जाता है। So if you have any type of queries, just comment below, and if you need to some type of different cases, just comment below. I will show you the whatever you want to learn in the field of radiology. So in this patient, the axial view was not properly identified, just because it's so difficult to identify it in axial. This is a MRCP sequence. यहाँ में जो दिखाई दे रहा है ये गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर में ये 3 स्टोन है। ये 3 स्टोन का नाम बता दो इफ़ यू नो। यहाँ में जो दिखाई दे रहा है ये 3 स्टोन है, और ये गोल ब्लैडर जाके ऐसे, जो गोल ब्लैडर है जाके ऐसे CVD में कनेक्ट हो गया है। और यहाँ में तुम लोग देखने से क्या है, इसमें भी एक स्टोन है। ये अंदर में ये एरिया का नाम क्या है? एक्चुअली इसको अच्छे से देखने से पता चलेगा। जो लीवर से 2 डक्ट आ रहा है, ये राइट हेपेटिक डक्ट, और ये जो आ रहा है ऐसे जा रहा है, आ रहा है मतलब जा नहीं रहा है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। ये दोनों डक्ट जब कनेक्ट होता है, मतलब मैं ऊपर ही हिस्से में दिखाई दे रहा है, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, और ये जो है ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, और ये जो है ये गोल ब्लैडर है, और ये गोल ब्लैडर जहाँ से ख़त्म होके यहाँ में हेपेटिक डक्ट में लगता है, ये सिस्टिक डक्ट है। और ये जो ऊपर से जो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ रहा है, इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। उसके बाद ये तीनों जहाँ से जॉइन होके ये ड्यूडेनम के ओर चला जाता है, तो इसको बोलता है CVD कॉमन बाइल डक्ट। और जो ये PD से होके एक डक्ट आ रहा है, पेंक्रियास से एक डक्ट आ रहा है, जो PD से जो फ्लूइड आता है पेंक्रियाटिक डक्ट से, वो जो आके यहाँ में लगता है ड्यूडेनम में, इसको बोलता है एम्पुला। और ये जो है ये ड्यूडेनम है, और ऐसे स्टोमक से आके ड्यूडेनम ऐसे कनेक्ट रहता है। सो ये एक बेसिक एनाटॉमी है। ये एनाटॉमी जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ में देखने से तुमको दिखाई देगा एक स्टोन है, और ये स्टोन का लोकेशन तुमको बताना है। क्योंकि हमको पता चला कि जो हेपेटिक डक्ट होता है वो CVD और सिस्टिक डक्ट कनेक्ट होने के बाद ही उसको हेपेटिक डक्ट बोलता है, वहाँ तक हेपेटिक डक्ट बोलता है। उसके बाद जो आता है वो CVD है। यहाँ में देखने से पता चलेगा गोल ब्लैडर यहाँ में ही कनेक्ट हो गया है, ये वाला डक्ट में ही। उसके बाद ये स्टोन है यहाँ में, तो ये जो स्टोन है ये CVD में है, और ये नियर तो हेपेटिक डक्ट है। और यहाँ में ये बहुत ही, जब भी नॉर्मल रहेगा तो सब डक्ट सोता रहेगा। ये हिस्से में ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ में कोई सा भी इंटरप्ट नहीं है, तो इसीलिए जो फ्लूइड है वो अच्छे से फ्लो हो रहा है। और जो डक्ट है वो नॉर्मल साइज में है। नॉर्मली CVD इतना साइज में ही दिखाई देगा, ये जो वाइट लाइन जा रहा है। और PD से जो पेंक्रियाटिक फ्लूइड आता है वो थोड़ा मात्रा में ही आता है। इट्स सीम्स लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंक्रियाटिक फ्लूइड flow in this way, so this duct is so small,
So here you can see it's normal also, so it's showing just a, I will zoom it out, zoom in out. Here you can see this is the PD. I will show you in Excel, it's properly showing the PD. This is because MRI is lots of different sequence, so it's properly view every anatomy in different sequences, just because it will be help to reduce fat signal in T2FS, and in T1 we will identify if there was a fluid, in T2 we will identify is a fluid, and in STIR we identified if there was a fluid or fat. In T2 the fat appear bright, but in STIR the fat appear hypo, so that we identified if there was a fluid or if there was any type of fluid flow, so it's appear totally bright in T2FS. Here you can see the stone in this sequence in hypo. This is the 3D sequence. As I show the brain angio, in this sequence will properly identify if there was a I will show you the Excel of this. In this area you will see the every patient anatomy was different, just because there was a different anatomy of every patient, just because the problem is different. Here you can see in this 3D sequence the stone appear hypo, so that in this CBD the connection is not showing, the flow is not appear in this 3D sequence. Here you can see the stone in this area of CBD, so it's appear hypo. जब भी मतलब गोल ब्लैडर में स्टोन होता है तो MRCP करके देखता है, क्योंकि CBD में स्टोन रहने से जो गोल ब्लैडर का ऑपरेशन कर लेता है उसके बाद भी प्रॉब्लम रह जाता है, क्योंकि गोल ब्लैडर तो यहाँ में ही ख़त्म हो जाता है। कॉर्नर में दिखाता है थोड़ा, हाँ ये अच्छा हो जाएगा। ये पेशेंट का अल्ट्रासाउंड में दिखाई देगा गोल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन ये पेशेंट का CBD में भी एक स्टोन है। और गोल ब्लैडर में ऑपरेशन करने से क्या होगा, यहाँ में गोल ब्लैडर को काट के बाहर कर देगा और यहाँ में क्लिप लगा देगा। तो पेशेंट हैव वन ऑफ द स्टोन इन CBD, so it's create more problem, just because if the hepatic fluid was not properly flow, the patient was problem of jaundice. So ऐसा कुछ केस में MRCP करके देखता है। Hello brother, if you have any type of queries, just comment. What is your name? Here you can see in this single image the stone appear in this image hypo, so that the CBD was not connected in this area. And here you can see in the gallbladder the stone was hypo, so it's created the stone properly. This sequence are like in different angles, so it's appear moving the CBD and hepatic system. Here you can see the stone in this area, so that it's not showing any type of connection.
we will take those slides in different angles, so it's appear moving. So today's session is ended here. If you have any type of query, just comment below and we will meet in next class. Till then, bye bye, good night. I have a question. What is the diagnosis of this patient? Just comment below. Today question. What is the diagnosis of this radiographer? Comment below. Hey, number one, just what is it? It's a brain of in a patient, CT brain image of a patient. Okay, seems like this is a not radiological. This is not. Hello. This is the image of CT brain. Its patient have bleeding in this brain, so that's why the bleedings appear in this patient was bright. Today's question is this: what is the diagnosis of this patient? Hello, are you hear me? So what are you from radiology, or you are the normal people in YouTube? I don't know when the comment is appear. So the class is ended here, but I have also a LS spine of CT. I will try to convert in MRP. Yeah, it's now. Hey brother, are you from radiology field or you are a normal public in YouTube? This is a CT scan of lumbar spine. Here you can see the lumbar. Yeah, it seems little difficult to control brightness in these apps. Here you can see 5, 4, 3, 2, 1. One of the lumbar vertebra was collapsed just because patient have injury. The lumbar spine was collapsed and the vertebra was fractured in this area, and this L5 was dislocated, so it's compressed the spinal cord. So this is the CT image of a patient. I will show the MRI of this patient. This is a T2 image. Here you can see just because of the
L L5 vertebra was little bit of dislocation to the posteriorly, so it's appear this herniation in this area, so that the patient have pain in lumbar spine, lower back, and also the patient have history of injury. It may be occur from the injury history, but here you can see the problem in this patient. The fracture happened so that the bone and disc was compressed the vertebra totally. Normally the vertebra look like this in this L2, L4. In this area you will see that normally the vertebra, the spinal cord look like this and CSF flow properly, but in this point you will see the compression of herniation of this and compress the spinal cord. Here you can see the area of this point was totally narrow, so that patient have weakness in lower limb and severe pain and unable to walk and stand. I will show you the axial image of this patient. Oh, here is a G2. If you see properly, the spinal cord was totally compressed in this area. Here you can see normal spinal cord was healthy. Spinal cord was look like this. The spinal cord was showing hypo, and under the brighter area was CSF. But in this point, the CSF was not flow proper area. Also, it's compressed the vertebra totally. So that the patient have a lower limb weakness or walking difficulty or severe back pain. In LS spine, we identified if there was a problem in vertebra or the spinal cord. Normally the spinal cord look like this, but in this section also patient have injury, so that the disc herniation is more in this point. Here you can see the disc was properly herniated to the spinal cord, so it's appear narrow in this slice. Normally discs look like this. There was the black spot was the spinal cord and bright area was the CSF, but in this patient you will see the disc herniation was causes severe compression in spinal cord, so that patient have history of lower backache. This is the class for today. I will meet you next class. Till then, good night.